Good morning. Let me introduce myself again. She has introduced a bit, but I will start with a small introduction of mine. I started my journey into corporate world around 33 years back. I passed out as a student like you. I worked for ACC Cement for 18 years. And in 2008, when I was heading a northern region for them as a HR head, I moved to Mawana Sugars, Siddharth Shriram Group. I was head HR for Mawana Sugars for 4 years. And in 2014, I joined JK Tyre as CHRO and worked for JK Tyre for 6 years. So normally when I introduce myself, I say I'm solid with cement, sweet with sugar, rolled with JK Tyre for 6 years. This is how I introduce. But people ask me that how you define your further journey. After JK Tyre, I say after running 6 years with JK Tyre, I got health in my kitty. I was head HR for Torrent Pharma and then CHRO for Mother Dairy. Life goes on, and as a professional, when I move, again people ask me how you define your last step. I said 32 साल काम करने के बाद हीरो बनना बनता था, so I joined Hero MotoCorp as manufacturing HR head. So this is a small introduction, but from here I just want to tell you that mine is a very small story. In a way, I have just collected my experience. For you, it's time to create your own story. You have joined a wonderful organization, institution that you are where you are, but you need to write your own story now. It's time for you to write your own story. You need to think about it. And I will just tell a story. एक कहानी आप लोगों को सुनाता. I will just tell a story from where you used to start. There was a king, and as usual, when king used to go for hunting, when he was with his team going inside a jungle, he saw that there was an arrow which was exactly hit on the target. वो bullseye होता है red color वाला बीच में, and the arrow was exactly on the target. As he moved inside the jungle, he saw that there were lot many arrows which had hit on exactly on the target. In कई पेड़ों पे, in many trees, the arrow was on the target. The king was impressed, and he told that his Senapati that please go around and find out who is this person. Who is this person who is having such a competence? He should be in our team. हमारी सेना में होना चाहिए उसको. The entire team went around the village. He brought a young boy. आपका नाम क्या है? अजीत जैसा एक young boy. They brought him in front of that राजा के पास लेके आए, and they said that he is the person who is having that competence. King was very happy. He patted his back and उसको बोला यार this competence, with this competence you should be in our team. बताओ बात करते कैसे हो? उसने बोला कुछ नहीं सर, तीर चलाता हूँ, जहाँ लग जाता है वहाँ जाके पेंट करता हूँ. Idea of telling this story that hitting an arrow and then painting a target, this option is not available for you. You need to create your own vision of life for your life now. This is the time when you should think that what you need to be in your life. Creating that vision becomes important. Always. So this option of hitting an arrow, जहाँ तीर लग गया वहाँ जाके हमने paint कर दिया target, that I think that option it's out of your syllabus. You need to create your vision. I still remember when I was a small boy, when I was a kid, I was a bright kid. My father was a trade union leader, so I was studying in a company-run school. I used to come first in class, and in class 7th I came first. So in the annual function I got that prize. Annual function होता था school college में होता है आपके पहले. So I got the first prize, and the chief guest of that function was the welfare officer, personal officer of that plant, where my father was working. And he was personal and welfare officer, those HR officer. He was the chief guest of that program. I took the prize and came back home, and I asked my father whether I can become that HR officer. As a small boy, there was a question asked to my father, can I become a HR officer? And he said, beta tu nahi banega to kaun banega? I think that was the vision which was created, which helped me to grow to a level where when in my profile, I am handling 120 such people which I aspire to be. That says that in your life, if you can create a vision for yourself, कि आपको करना क्या है, that becomes important. But one is, once you go back home today, the first thing which you should do is think about what is your life, where you want to be, what is the position. Like every year you should track down your career path now. Nobody will come and tell you that what you want to become. You need to decide your own journey, that where you will be. You need to target which companies you want to be in. That becomes important. But for that,
creating a vision is fine, that you have to do, but I always say that, like as a recruiter, when I go to colleges, 3 things we normally look into students. I think you need to prepare yourself accordingly. One is for sure that intellectual maturity we talk about. Your intellectuality maturity comes from the inputs which you are getting from the college, the professors which are talking to you on subject matter. That becomes important. You need to spend your time, you need to focus upon your studies for sure. It is important. The intellectual maturity will take, when we come as a recruiter, we will ask you many questions. We check your intellectual ability, and for that definitely your preparation becomes important. Very clearly. When I talk about intellectual maturity, I always talk to students that it's about your ability to talk on a particular topic, give your views on a particular topic, and that comes from your knowledge, and knowledge comes from reading books. Reading course subjects, course books is fine, but apart from course, you need to develop a habit of reading books. If you want to be a successful professional in your life, at a level, the things which matter is how you can articulate your things, your ability to put your words, ability to put your thoughts into words, that becomes important, and that is where the vocabulary becomes important. So reading books, at least this should be your first idea taking from this session, that you should allocate at least half an hour or 1 hour for reading books. Read whatever you want to read. Readers are leaders and leaders are readers. You should remember that. Those who read, they become leaders. And those who lead, they always read. So make a habit. Allocate time. If you don't do, you will miss it. After 10, I am sure if you start it today, I am sure after 10 years you will say, thank you Mr. Pandey, you have given a right advice. I am sure many of you might have already reading, but those who are not in a habit of reading books, do it today. Do it today. I still remember, I went to my Neemrana plant. My time office person, he came to me, sir, while there was a party, I was dancing. He said, "Aapka number chahiye." मैं number तो मैं दे दूँगा, but I want you to read an article every day and click a photograph and send it to me. And he started doing it, and I can see the growth he got in his career by just reading one article a day. I can see very clearly the maturity he got through reading books. I think that becomes important. Even at my age, I also read a lot. I am on LinkedIn, I write an article every Monday. But writing article is something I have to read a lot. I put my thoughts for sure in that article, but I get a lot of information by reading it. And I have seen that for last 3 years I am doing it. I can see that I am evolving at this age also. So that becomes very important. One is creating your vision. शाम को घर जाके पहला काम आपको करना है, you have to think what I want to become. अगर नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे. Without vision you cannot succeed. Not only individual, any organization will not succeed if they don't have a vision to move forward. तो create a vision for self. करना क्या है जिंदगी में? What is important? करना पड़ेगा. वो बाबा रामदेव को दिखाओ, आपने योगा करते बोला करने से होगा, बोलता है ना, ऐसे करने से होगा. तो you have to do it. Nobody will come to help you to create your vision. आपका vision आपको ही बनाना पड़ेगा. And you should be motivated by that vision every day. That is what vision will do. You should be motivated by that vision. कि मेरे को ये बनना है. I created my vision when I still remember after I got my first job, I went to Mount Abu, and Mount Abu में एक जैन मंदिर होता है, and they say वहाँ अगर कुछ मांगो तो आपको पूरा मिलता होता है. So I said कि मेरे को CHRO बनना है. In 1994 I was there. I said I want to become a CHRO. जिस दिन बनूंगा वापस आऊँगा. That was, you have to create such things in your mind that I want to be something. And I went back. When I became CHRO for Mawana Sugars in 2008, I went back to that temple again, back. This is how you create milestones in your life. करना क्या है? You should know that this organization I'm joining. Then what are those I will just go through one more thing. There was a farmer, there was a woodcutter, and his son, when he was growing with his father, he learned that skill of cutting woods. And at a stage, we know that every generation is smart than the earlier one. You people are smarter than us. He thought, why I should work with my father? Why I should not take a job?
तो उसने क्या, वो ही वेंट टू द टाउन टू ए टिम्बर मर्चेंट, एक जाके टिम्बर मर्चेंट के पास, एंड ही आस्क्ड फॉर ए जॉब एंड ही गॉट ए जॉब, एंड जॉब कम्स विद अ टारगेट एवरी टाइम. And that job, when he said, you have a target of cutting trees. So first week he was able to cut around 18 trees पहले हफ्ते में. Second week जब काटने लगा तो it came down to around 40. Third week it came down to 10. He got bit worried. थोड़ा सा उसको चिंता होने लगी कि ऐसा क्या हो गया कि I am not able to sustain my targets. So गांव में जैसा होता है, he went to a sage. There was a साधु के पास गया and he explained his problem, his entire thing, that this is what is happening. My ability to cut trees is coming down. Am I losing my strength? The farmer asked him, what was the last time you have sharpened your axe? कुल्हाड़ी कब तेज करी थी last? He said, ये तो मैं भूल गया. I think for you people, sharpening axe is developing your competencies. And you need to do it every time. Every day is something for you need to think about what I am adding to my competence. Very simple thing of doing competency is just Google out leadership competencies. You will get list of competencies. First read those competencies, what those competencies are, which is required to be a successful professional. Until unless you don't know what that competency is, you will not develop yourself. You should know if communication is a competence, is a behavioral skill which is required for being a leader. You should know what is communication skill. Can you tell me what exactly is communication skill? Any one of you. What do you understand from communication skill? How to express yourself very well. What else? बोलो, ये interaction है. Don't be shy, हाँ. Conveying and interpreting messages, that is communication skill. What else? If I see, they say every competence have certain behavioral indicators. You can see and say, like I will come to communication again back. मैं बोलता हूँ there is ये driver अच्छा है. He is a good driver. क्यों बोलते हो आप? One is driving skills और हाँ कुछ बोला, किस बोल रहे थे? Feedback. अभी कम्युनिकेशन को छोड़ रहा हूं मैं, अभी मैं मेरा सवाल आता हूं. दैट इज राइट फीडबैक. आई एम सेइंग ही इज अ गुड ड्राइवर. हाउ यू डिफाइन ए गुड ड्राइवर? इसने बोला ड्राइविंग स्किल्स, ही नोज हिज वर्क वेल. व्हाट एल्स? अच्छा ड्राइवर किसको बोलो? गाड़ी अच्छा चलाता तो अच्छा ड्राइवर हो गया. सॉफ्ट स्किल्स यस, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स. हाँ ठीक है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं चाहिए. व्हाट एल्स? Obeys the traffic rules. और what else? Okay, गाड़ी खराब होगी तो गाड़ी ठीक भी करेगा कभी कभी. Then only he is a good driver. So these are the behavioral indicators when we say something, talk about some competence. Same way when I am talking about communication skill, when I said कि expressing your views, fine. What else? Communication skill. Feedback ठीक है. Feedback थोड़ा सा और explain करो. हाँ. होता है वापस रिसीवर के पास जाता है, जो पूरा गैप. He is talking about listening skills. Listening skills is a communication part of communication skills. What else? One is what I am doing is a part of communication skill. If you have been asked कि भाई इधर आओ और बात करना चालू करो किसी टॉपिक पे, are you able to communicate? Right? Your presentation skills when you create those PPTs, that is also part. When you are writing emails, that is also part of communication skills. When you are listening somebody, it is part of communication skill. Writing. So these all things are part of communication skills. Now you have to evaluate yourself. Everyone. Self-evaluation करोगे घर जाके कि where I stand on communication skills. Right? Important is you understand that what is my strength and what is my weakness. When I say there are lot many competencies, you will find there are teamwork, there are interpersonal skills, there are planning, execution, problem solving, lot many. You will get list of competencies. But at least read about those competencies. What are those competencies which are? If you don't know what is required, how you will improve those skills? That becomes important. First is you should know it. So first thing I said, create a vision for self. Second, you need to read books as much as you can. Third, go and research on competencies, behavioral competencies. I am not giving entire list to you.
But every competencies have certain behavioral indicators. Successful person is one who knows that what is his strength and what is his weakness. You should know that this is not my strength. Then you can take help with others. You need to collaborate with others. When you move, then there comes the second point when I said intellectual maturity. Second is your social maturity that becomes important, and that's what we observe when we come for to hire people. And how we observe social maturity. One is why social maturity is important. First part. Tell me. That's true, because once you are in an organization, you have to work in a team. Individual performance is fine, but team performance becomes important for us. So what we will look for? We will look for social maturity. And what is social maturity? How you empathize with others, how you respect others. That becomes important for me. How you collaborate with others. Coordination is one. Delivering on promises is important for me. What promise you made to your team members, that becomes important to me. And how we observe it? While we are in a group discussion, we can easily observe that how you empathize with your entire team. In a discussion, your behavior itself, your attitude, the way you are interacting, that gives me an idea of your social maturity. Right? I can see that. If you are just pushing someone back in the discussion, I will clearly see that he is not a team. So one is intellectual maturity, second comes for me is social maturity. Right? So these competencies, go back today, list out at least 10 competencies which you think that you should develop. Try to start working upon it. If you think that you can talk like me, आज से 30 साल पहले जब मैं निकला था तो मेरे को ऐसा चाहिए, I used to search for something where I can stand and talk, पाँव कांपते थे. I was a Hindi medium school से मैं पढ़ा बच्चा हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ. My English was not that great. अभी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है. I can't talk like Shashi Tharoor. But yes, I can at least communicate what I want. But it all came through reading books, nothing else. I was not able to even communicate 2 lines in English when I started my career. ठीक है, what is your name? My name is Pradyumna Pandey. ये तो आता था. But to talk on a topic, it becomes difficult. It needs words, it needs things, your knowledge, your intellectual maturity becomes important. And that only comes when you read books, nothing else. If you don't read books, I guarantee you for 5 years you will survive in corporate, you will grow in corporate. After 5 years, your entire growth will stop. You will not able to grow. You will not able to impress anyone. It's all about communication. It's all about making everybody in your side. It's all about creating an environment where people follow you, and people will follow you if you are able to convince them. Convincing comes from your communication skills. So going back today, create a vision. बनना क्या है? नहीं तो नहीं बन पाओगे. And important also is, it's not only your knowledge, it's also about your attitude. There are certain things in life. See, life will not be so easy. There will be challenges where you work, even in your personal area, there will be some challenges. You will face those challenges. But for sure, you can't control the circumstances also. It's not easy. But at least you can control, you can manage your attitude towards those circumstances. A positive attitude in life is very important. You need to see what's positive in every situation. That is easy. That becomes easy. And for that, I always say that a zero-cost formula is with you. Keep smiling. Very important. It looks very simple, but this is a zero-cost formula which has helped me in my life. Even if you are not feeling good in your internally, if you are not happy, just keep smiling. That creates a positivity. You will smile to someone, he will smile towards you. I think that positivity brings a lot of energy and motivation at workplace. So always keep in mind that your positive mindset is something which will help you to be recognized. Everybody looks for. अगर आप काम देते ही आप पहले negatively उसकी तरफ देखोगे कि नहीं हो सकता बोल दोगे, you will lose your ground. When you move to corporate, nobody will come and say कि आपका काम है. Nobody will come. किसी के पास टाइम नहीं है. We don't have time to mentor you. बोलते हैं, बात करते हैं mentoring, coaching की. But at workplace, there is so much of work pressure. Nobody will come you. You need to grab those opportunities.
But that habit of grabbing opportunities will come when if you are grabbing those opportunities in your college. आपके पास होंगे ना, क्लब्स होंगे, एक्टिविटीज होती हैं. Do you come forward and say this I will do? Somebody who started introducing me, she has grabbed the opportunity. She has grabbed the opportunity. So this attitude of grabbing opportunity will help you when you move. But yes, life is like, there are certain values which you need to carry with you. Value-driven life, value-driven work, I think that helps a lot. There are certain values which I follow, I will share with all of you. You can have your own one. It's not a fixed, ready-made formula for everyone. I am passionate about it, about what I do. Passion is a value for me. Are you passionate about what you do? Important hai. Are you passionate about it? Passion is doing every time what you do should be better than what you did the last time. Every day should be better than what you are. Self should be better than what you are today. What I am adding for tomorrow, that is your question to yourself. कि मैं अपने में क्या सुधार ला रहा हूँ. Every day you have to track about yourself. Easy नहीं लगता है, but you can do that. I am passionate about my social media presence. People say that social media is a bad thing. वो रील देखते रहते हैं लोग ना. But I say if you are able to track your return on investment of social media, then you are a successful professional. It's not a bad thing. Without social media, you can't survive now. You can't grow. But how to use it properly, that becomes important. I am on social media. I am on LinkedIn. I have 60,000 followers. I request all of you to follow me so I can add 50 more. But I write every Monday. I write an article. I think that is what my learning is. When I write, I learn a lot. So I have 30,000 connections, 60,000 followers. I write. It is read by lakh of people. So I created that platform for myself. आज लोग मुझको जानते हैं because of my LinkedIn. Can you put your efforts to create your network slowly? Connect with people, those who can benefit from where you can benefit from their knowledge. The network, if you can get. So start doing that. Invest time on social media, not necessarily Instagram पे ही करना है. And Instagram is also not a bad thing. If you have an idea how you are going to use those social. I am on Facebook. I know this generation is out of Facebook. I know that. My son a day wrote, oh shit, my dad has more connections than me on my Facebook. But I have an idea. I am on Facebook because I can connect with my leaders with LinkedIn, but with my workers, I am connected on my Facebook. They see me dancing there, they see me singing there. When I move to a plant, they will say, dance बहुत अच्छा करते हो आप. So I create a connection with them. Na? So my idea is I need to create a connect with my people. I am on Facebook. Then why you are on Facebook? You should know it. You should know it. I am on Instagram. My Instagram handle is Happiness Ki Pathshala. I am there because I am a happiness coach. I want to create my career as a happiness coach. I have created my Instagram. So I know that return on investment, what time I am investing on social media, I am getting benefit out of it. So you should be on social media, but with the intent, not for watching just reels. मैं reel बनाता हूँ. मेरी Instagram reels बहुत चलती है. I do that, but I do that to create a perception. When I go in a fraternity, people benchmark me for fitness. See, if I am in a gym, मैं gym में reel बनाता हूँ, मैं डालता हूँ. मेरी reels बहुत चलती है, अच्छे views आते हैं, करता हूँ मैं. But in my mind is, am I influencing someone through my reel? People respect me for my fitness. I just turned 57 in December. मैं 57 साल का हुआ तो मैंने उस दिन 57 किलोमीटर साइकिल चलाई. In a stretch, I have done 57 किलोमीटर साइकिलिंग. मैं इंदिरापुरम से यहाँ ग्रेटर नोएडा तक आया था, फिर यहाँ से वापस गया था. So I did that. रील बनी उसकी. But that passion, I am talking about the passion which I have for social media. Not necessarily everybody should have a passion of social media. You can have your own passion. But you develop a passion where you see that I am creating some value for myself. मैं कैसे अपने आप को कर रहा हूँ. If fitness is your passion, do it. I do 10 kilometers walk every day. I do cycling once in a week or once in 15 days for 40-50 kilometers. I go to gym. करता हूँ.
And this physical fitness is, I think, something which you are young, you all are fit now, but create a habit of being, putting time for fitness. That becomes important. That gives you a confidence, because it's all, when I say passion, my passion is to be seen as someone who is well prepared to present self. If I'm saying I'm going to KCC for a talk tomorrow, I might have called this suit, मैंने बाहर निकाल के कल रात को ही डिसाइड कर लिया था मुझको क्या पहनना है. You should be so careful about what you wear daily. How every day is a event for yourself. Every day of life should be like an event. You should be seen like who is prepared, who is well groomed. That gives you this confidence. ना आपको खुद महसूस होता है. When you wear good, it's not only खाली कपड़े पहनने से सक्सेसफुल हो जाओगे, but that is one of those points which will help you to create that confidence in self. जब निकल के जाओगे और लोग चार आदमी आपको देखेंगे पलट के, you feel that, बोलते हैं ना, किक कहाँ से आता है, वहीं से आता है. You should invest your time on yourself. Self-love is something which makes you successful. You should love yourself. So, be passionate about it. First value is passion, right? Second value for me as a professional is courage. Courage is most important. Courage of saying that challenging conventions. Courage of challenging conventions. ये ऐसा ही होता आ रहा है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलेगा. If that mindset you carry, nobody will recognize you. You should challenge conventions कि ये ऐसा हो रहा है, but इससे अच्छे तरह से हो सकता है. And that brings you to creativity and innovation as something which should always be in your mind. How can I be more creative? How I can be more innovative? Keep that in mind. When I talk about innovation, it's about thinking beyond, stretching your ability, thinking what is not seen by normal people, you should see. I remember a story on this. मैं कहानियाँ सुनाता हूँ बीच बीच में. एक किसान था, उसके पास 3 घोड़े थे. And he used to take them for माल ढोने के में इस्तेमाल करता था. Used to for transportation of goods. Slowly when ये आया automation came, तो उसने ऑटो खरीद लिया. And those 3 horses became, मतलब उनका काम नहीं रहा. तो he discussed with his wife one day कि इन घोड़ों को बेच देते हैं. And she suggested that go to town, शहर की तरफ जाइए, पशु मेले में बेच के आना है आपको 3 घोड़े. And a day was decided, and while he was moving towards the town, his wife gave him a tiffin, खाने का डब्बा हाथ में दिया, बोले रास्ते में खाना खा लेना, घोड़े बेच के आइए. While he was going towards the town, उसने देखा कि नदी बह रही थी. तो सर नहा भी लेते हैं, खाना खा भी लेते हैं. So that was the charm. तो उसने बोला पर नहाने जाऊंगा तो घोड़े भाग जाएंगे. The horses will run away. तो उसने आसपास देखा तो एक साधु बैठा था. साधु के पास जाके उसने बोला कि भाई मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरे को नहाना है, खाना खाना, ये 3 घोड़े हैं, कैन यू हेल्प मी? तो साधु ने उसको 2 रस्सी के टुकड़े दिए, छोटे छोटे. बोले ये लो, यूज इट. उसके दिमाग में क्या आया, उसने एक घोड़े का पाँव एक पेड़ से बांधा, एक रस्सी से, दूसरे घोड़े का पाँव दूसरी रस्सी से बांधा, अब तीसरे घोड़े का 2 ही रस्सी थी. अगेन ही लुक्ड एट द साधु की तरफ देखा, टुवर्ड्स द सेज. तो उसने बोला कुछ नहीं करो, इसके एक पाँव पे ऐसे हाथ लगाओ और पेड़ पे हाथ लगाओ, एक्टिंग करो कि आप इसको बांध रहे हो, देन यू गो. एंड होता है गांव में, हम साधु लोगों पे विश्वास करते हैं, सर कुछ चमत्कार होगा. ही डिड दैट. ही वेंट, नहा के खाना वापस आया. व्हेन ही केम बैक, ही सेड दैट ऑल 3 घोड़े वहाँ पे खड़े थे. ही वॉज बिट सरप्राइज, बट ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट वॉज. उसने दोनों घोड़ों की रस्सी खोली, घोड़े के पीठ पे हाथ मारा और शहर की तरफ निकल गया. 100 मीटर गया होगा तो वहाँ देखा कि 2 ही घोड़े उसके पीछे आ रहे थे. वो तीसरा घोड़ा आ ही नहीं रहा था. ही केम बैक टू द साधु के पास. आके साधु से बोला कि सर आपने हमारे घोड़े का क्या कर दिया साधु जी, ये हमारे साथ आ ही नहीं रहा है अभी. तो बोले तुमने इसको खोला नहीं. बोले इसको बांधा कब था मैंने. उसने बोला नहीं, बंधन यहाँ था. तो ये जो बंधन है हमारे दिमाग के, तो दिमाग के घोड़े खोलने पड़ेंगे. दैट इज इनोवेशन, दैट इज क्रिएटिविटी. डोंट लिमिट योर सेल्फ. You need to think that what you can do, you have to explore your abilities, explore your capabilities. So one is passion, second is courage. Fine, 2 values. Third value is integrity. Very important. See, integrity is a bit difficult one. I also know that when I define integrity is
doing right things even if nobody is seeing you. Doing right things even if nobody is watching you. That is integrity. When I drive my car in city, I don't throw trash outside. When I'm driving on highway, कभी कभी मन कर जाता है तो खोल के बाहर फेंक देता हूँ. होता है, मेरे साथ होता है. My kids now started questioning it. पीछे बैठते हैं, वो बोलते हैं कि ये बाहर मत फेंको, बाहर मत फेंको. That is integrity. If I stop myself in throwing trash at highway also, where nobody is seeing, only my car is moving, that is my integrity. And there is no scale. आप ये नहीं बोल सकते 1 से 10 का स्केल क्या है ऑनेस्टी का. या तो बेईमान हो या ऑनेस्ट हो. ये नहीं बोल सकते कि 5 नंबर दे सकता हूँ ऑनेस्टी में, या 10 नंबर में से 9 दे सकता हूँ. Either you should be honest, or you are a dishonest person. And why I am saying integrity is important, because when you move into an organization, when hundreds of people are watching you, when you become a leader where thousands of people are watching you, it is important. People trust you if you are honest. So you need to inculcate that value in yourself. मुझे ये करना है. And कई जगह आएगा, पुलिस वाला रोकेगा तो 100 का पत्ती हम भी निकाल के देने के आ जाते हैं. That will come. But with practice you can bring yourself towards 10 by 10. Honest. It's not easy. Life will throw many challenges. मेरे को कभी कोई चालान पकड़ता है, मैं बोला काटो चालान बोलता हूँ. बिकॉज मेरे पास पैसा आ गया है, मैंने कमा लिया है. पहले मैं भी 100 रुपये दे के निकलने की कोशिश करता था. बट still, jokes apart, honesty always helps in life. You are being watched by many people. As a professional, many will watch you. Your professional integrity will help you to grow. So one is passion, courage, integrity. Fine. Third is being responsible. See, taking ownership of things which comes to you. एक होता है नौकरी करना, एक होता है doing a job with ownership. And organization will look definitely for someone who takes ownership of things. Right? It's important. If you feel that something is given to you as a job, you need to ensure that it is done 100%. And these are the small things which will say differentiate you from others. Keep these 4-5 things in mind. Don't. Being responsible, now even when I say being responsible, not only in office, at your home, your parents have spent a lot of time on you. Do you feel responsible towards them? Technology is with you. Do you call them every day? A video call a day? Exactly fixed time? That is being responsible. You can do that. You are aware. Give me 2 minutes. Sorry. See, it's important. It's important. I call my parent every day at 9 o'clock. और आज भी जब मैं जाऊंगा, आई विल डेफिनेटली टॉक टू देम एंड से दैट मैं KCC में गया, स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया. प्रोबेबली माई मदर विल नॉट अंडरस्टैंड मच, बट वो बोले कुछ तो बड़ा काम कर रहा है बेटा. हाँ, सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू टेक. दैट इज वन मोर लर्निंग, दैट पेरेंट्स आर लिविंग गॉड. कॉल देम every day, 9 o'clock, 8 o'clock, whatever, but fix a time. That should become a habit. So being responsible is a value
which helps you to make yourself different from others. And last one is the value which should carry is respect. Respect for others becomes important. How you are respecting, not only you will respect your teachers, elders, fine. Are you respecting your colleagues to each other? Respect everyone. In an organization perspective, it becomes important because when we say respect for diversity, there will be people with diverse perspective coming in, different language, different states, they are there. Respect them. That makes you leader. So, बोलो एक एक करके क्या क्या बताया मैंने 5 वैल्यूज. 1 पैशन, करेज, इंटीग्रिटी, being responsible, respect. So just keep these things back of your mind. कुछ ऐसा कोई बड़ा चीज करने का जरूरत नहीं है. But if these 5 values are guiding your life, you will definitely be successful. I am sure. I consider myself successful. I started from a Hindi medium school. I started as a HR officer. If I today do an entire 120 of such HR officers which I aspire to be, I am handling them. That is my success. And these small things have helped me, nothing else. These small things. So, creating a vision, yes. जाके करना है आज. मतलब देखो ऐसा है, अगर खाली सुन के चले, सत्संग होता है ना, सत्संग में क्या होता है, अंदर बैठे हो, राम नाम चलता है, ऐसा लगता है कि इसके अलावा कुछ दुनिया में है ही नहीं, भगवान के अलावा, और बाहर निकलते फिर पाप की दुनिया में चले जाते हैं हम लोग, राइट? तो ये सत्संग जरूर है. इट्स लाइक सत्संग, आई एम सेइंग. बट इफ यू कैरी one or two important points which you feel can be implemented in your life, that is my success. I am not saying कि 5 के 5 वैल्यूज यू शुड प्रैक्टिस. एक वैल्यू पकड़ के कर लो, करो ना. 9 बजे फोन अपने माता पिता को क्यों नहीं करोगे? They have invested their time, they have invested their money on you. Do it. They will feel happy about it. Nothing else. एक phone call, you can see their happiness. Do it every day then, without fail. You are away from them ना. जो अपने पेरेंट्स से आते हैं, they are fortunate. जो बाहर रह रहे हैं, do it ना. पैसा भी नहीं लगता है WhatsApp कॉल में, तो it doesn't cost you. But time fix करना. ऐसा नहीं जब मना है तब कर लिया. They should have something to look for. That is important. How you engage them. And that becomes important when you work as a leader. How you engage your team. That you learn from these things. How you are empathetic towards them. How you know their aspirations. Like I know that what my parents want. I also know that what my team wants. So you should know the aspiration of your team members. You should know that what they want. What is their development of aspirations, what is their career aspirations. Most important thing is, एक और चीज़ जिंदगी में, are you able to be happy on others' success? बहुत कठिन है, करके देखना कभी. 3 Idiots मूवी देखा कभी? रिजल्ट निकला था तब क्या हुआ था? 2 लोग पास हो गए थे तो डांस कर रहे थे, और जब लगा तीसरा फर्स्ट आ गया तो क्या हुआ? They became unhappy. And it's very normal. इवन इफ यूर किन्स, आपके कजिन्स कोई ऐसा कोई चीज़ अचीव करता है, फॉर ए सेकेंड समथिंग कम्स इन योर माइंड, अरे यार मेरे को नहीं मिला, एंड यू बिकम अनहैप्पी फॉर ए सेकेंड. बट मैनेजिंग दैट अनहैप्पीनेस इज योर सक्सेस. इफ यू आर एबल टू सेलिब्रेट, इफ यू आर एबल टू appreciate others' success, that is where this skill I am saying will be more applicable at workplace. You will find many people. I still remember, ऐसा होता है. My secretary got a 10% increment. She was happy. She came to me, sir, thank you very much. This is the best increment I got. सब कुछ बोला उसने. लंच के दौरान उसका MD के सेक्रेटरी से बात हो गई, उसको 15 मिला था. आने के बाद रोने लगी हो. मैंने बोला यार लंच से पहले तो तुम मेरे को थैंक यू बोल रहे थे, अब रो रहे हो. सो मैनेजिंग दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. Look at yourself. What I am today, what I want to be tomorrow. Try to improve on your own without comparing with others. If you compare with others, for sure you will get dissatisfaction. Compare for self. कि मैं आज क्या हूँ, मुझे कल क्या improvement लाना है. Every day you have to think about it. Every day.
एंड यू हैव टू सर्च. उसका कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं है. देयर इज नो रेडीमेड फार्मूला फॉर इट. यू नीड टू डू इट. यू नीड टू टॉक, think about it every day before you go to sleep. Think about it, what I have learned today, what I am going to learn tomorrow. I do it very sincerely at this age also. Right? Can we just summarize what we have talked? पहला क्या करोगे? Create a vision. बहुत आर्टिकुलेट करना उसको, सोचना बनना क्या है, और बार बार सोचना और हर दिन सोचना उस विजन को. इट्स नॉट ए स्टैटिक थिंग, इट इज़ ए डायनेमिक थिंग. यू नीड टू वर्क ऑन योर विजन. अभी एक बना, थोड़ा सा आगे बढ़े तो और विजन को थोड़ा और अच्छा कर सकते हो. यू नीड टू वर्क ऑन योर कॉम्पिटेंसीज. गो बैक, लिस्ट डाउन दोज कॉम्पिटेंसीज, read about the behavioral indicators of those competencies. Try to bring those behaviors in yourself. That is one, very clearly. Second, following those values becomes important for you. Third, I think I talked about intellectual maturity, I talked about social maturity. Third is the emotional maturity, which I normally, these three things, तीन ही चीज़ देखता हूँ: social maturity, intellectual maturity and emotional maturity. And how I judge your emotional maturity is your self-confidence, the way you make eye contact with me, the way you are sitting, your sitting posture, all those things matters. All those things matters. So we can easily observe you while we are in a group discussion. वहीं decision हो जाता है किसको लेना है. We can easily see that your attitude is through your, this when we say emotional maturity is all about your attitude, your self-confidence. So जब when you are moving for any like group discussion, you need to be prepared ना. Preparation in the sense of intellectual maturity. जब तक पढ़ोगे नहीं, you will not able to talk about the topics. वो तो कुछ भी उठा के आपको दे देगा. Your ability to analyze the problem, analyze the topic, then putting your views becomes important. And it all comes from your reading things. If you start reading an hour every day, I think that is the success of today's session. Go back. कोई सी भी किताब उठा के पढ़ना चालू करो, पढ़ो. If you start it after 10 years, you will not able to inculcate that habit. This is the time when you can create that habit in yourself as a student. Read. कुछ भी पढ़ो. I am not saying कि anything comes in your hand, read it. Vocabulary is important. हम हिंदुस्तानी हैं, पहले हिंदी में सोचते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं. So important for us is we are prepared. And preparation comes through your focused efforts, for sure. You need to think about, yes, ये करना है. And life is about, always think that आज जब वापस जाओगे, I will give you an example, what should be your, when I say creating a vision, ट्रेन में सफ़र किया सब लोगों ने. Have you seen the train ticket when you book a ticket comes? क्या क्या होता है, मैं आपसे पूछता हूँ. ट्रेन टिकट में क्या क्या होता है और बताओ. ओके हैं, ओके. देयर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज, राइट? होता है बोर्डिंग फॉर्म. तो टुडे इज योर बोर्डिंग डे. ध्यान रखो कि टुडे मीन्स बीइंग इन दिस कॉलेज इज योर बोर्डिंग नाउ. ट्रेन टिकट में क्या होता है, कहाँ डेस्टिनेशन होता है, कहाँ पहुँचेगी होता है. दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू क्रिएट थ्रू योर विजन, राइट? ट्रेन टिकट हमेशा याद रखना. जब भी बात करो तो ट्रेन टिकट को याद कर लेना कि उसमें बोर्डिंग एंड डेस्टिनेशन. जब घर जाओगे तो ट्रेन टिकट तैयार करना अपनी ज़िंदगी का. बोर्डिंग तो हो गई है, अच्छी जगह हुई है, यू आर इन टू गुड हैंड्स. डेस्टिनेशन आपको तय करना पड़ेगा, एंड डेस्टिनेशन इज योर विजन. बट टिकट को अगर ध्यान से देखोगे तो कई स्टेशन पर रुकती है, उनके नाम भी उसमें लिखे रहते हैं. दैट इज द माइलस्टोन यू शुड क्रिएट फॉर योर लाइफ. व्हाट नेक्स्ट? 2 साल में क्या करूँगा, 4 साल में क्या करूँगा, 5 साल में क्या करूँगा. आई कंप्लीटेड माई PhD एट द एज ऑफ 55. I started in 2015, completed in 2022. I did my happiness coach certification last year because I wanted to create a destination of being a happiness coach in life. You have to plan your things accordingly.
योर ट्रेन टिकट ऑल्सो गिव्स द टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर. यू शुड नो दैट व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. पैसा भी लगाना पड़ता है टिकट खरीदने के लिए. दैट इज़ योर एफर्ट्स फॉर अचीविंग दोज माइलस्टोन्स. तो जब भी ज़िंदगी के बारे में सोचो तो ट्रेन टिकट याद रखना कि मेरे को मेरा डेस्टिनेशन मालूम है कि नहीं है. इफ़ यू आर नॉट नोइंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइफ विल नॉट गो इन द राइट डायरेक्शन. एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ? आई विल एंड विद अनदर स्टोरी, बट उससे पहले अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए. यस प्लीज. हाँ, okay. See, confidence comes if you are prepared. That is one. Now, what is preparation? जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो, whether you know the organization well, read about the organization well, पूरा पढ़िए. Do you know the job description well? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? JD आता है, JD को पढ़िए. And think about those roles, whether where I fit in. या उन रोल्स के लिए किन कॉम्पिटेंस की जरूरत पड़ेगी, उस पर बात करो. That becomes important. Preparation is must. Confidence is prepare yourself. शीशे के सामने बैठो ना, 4 सवाल पूछो, अब खुद ही को जवाब दो. जब मैं शुरू में बोलना शुरू किया था ऑन पब्लिक फोरम्स, आई यूज्ड टू प्रिपेयर. अभी मेरे को जरूरत नहीं पड़ता है. 10 साल हो गए बोलते बोलते, तो आई गो एंड स्टार्ट स्पीकिंग. बट जब पहला साल, आई स्टिल रिमेंबर 2014 वाज माय फर्स्ट पैनल एज ए स्पीकर. आई वेंट, मैं तैयारी करके गया था. 3 ही मिनट का मसाला था मेरे पास. 3 मिनट बाद मेरे पास कुछ नहीं था. मैं चुप बैठ गया. मैंने कहा ठीक है, अब आप बोलो सर. हाँ, नहीं था. एंड द मॉडरेटर वॉज राजीव बुद्धिराजा. ही वॉज CHRO फॉर जिंदल. एंड 2014 he again became moderator for that one more session to me. This time he said, Pandey ji, this time you outshined me. 2015 में 14 में उसने भी महसूस किया होगा कि इसको इतना ही आता था, इसने बोल लिया, चुप हो गया है. उसने मेरे को एक सवाल पूछा, मैंने बोल के चुप हो गया. It ended very abruptly because मसाला ही इतना था, उतना ही ज्ञान था. Confidence comes from the knowledge you have. आज मेरे को अगर पैनल डिस्कशन में बिठा देते हैं तो मैं घंटों बोल सकता हूँ, because I have that knowledge. Through reading I have gained that knowledge. So first thing, कंपनी के बारे में पता करो. हाँ, सेकेंड इज डेफिनेटली जॉब डिस्क्रिप्शन को देखो अच्छे से. प्रिपेयर योर सेल्फ. कॉन्फिडेंस विल कम फ्रॉम प्रिपरेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक व्हेन मैं आपको एक इन देता हूँ, इफ आई से इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, द मोस्ट स्टूडेंट्स विल, माई नेम इज दिस, माई फादर्स नेम इज दिस, माई हैव सो सिबलिंग्स. डोंट डू दैट. डोंट डू दैट. नाउ क्रिएट योर ओन स्टोरी. मैंने इंट्रोड्यूस किया है, आई एम सॉलिड विद सीमेंट, स्वीट विद शुगर्स. हाँ, कैन यू क्रिएट योर स्टोरी? There are a lot many things. What do you think about environment? What do you think about society? From where you started? What is your vision for life? You should introduction में वो जाना चाहिए. तुम जब अंदर आ रहे हो, तुम्हारा नाम तो मेरे को मालूम ही यार, मेरे को तो लिस्ट दे रखी है. You should never say my name is this. Never. Never start with say sir my name is Pradyumna Pandey. Why? तुम्हारा तो CV मेरे पास है ना. मैंने बोला नेक्स्ट स्टूडेंट को भेजो, मैं पहले पढ़ रहा हूँ, और तुम फिर वही बोल रहे हो my name is Pradyumna Pandey, my father's name is Purushottam Pandey. No. You should say that I am student of this, studying in KCC, but what is my what I think about society. उसको कहीं कैन यू क्रिएट ए स्टोरी. सबके लिए अलग अलग होगा, सब जाके एक ही स्टोरी मत सुनाना. Everyone has to be a different story which should attach to your passion, what you learn, what you did, what you want to do. कोशिश करो. ये स्टोरी भी मेरी एक ही दिन में तो नहीं बनी होगी ना. मैंने कई बार बोली, कई रोज इम्प्रोवाइज होते आज मैं बोलता हूँ तो लोगों को अच्छा लगता है. पीपल रिमेंबर मी बिकॉज ऑफ माई स्टोरी. So can you create your introduction in a way that people remember you when you move out of that room? You have to introduce that I am studying here, but before this I have done my studies in. Don't talk about school. Say वहाँ क्या सीखा? Why this course? वहाँ से कहीं से अगर can you create a story? If I am doing MBA, can you create a story on that? वो introduction में आना चाहिए. So confidence comes from preparation प्यारे, nothing else. हाँ जी, हाँ जी, please. देखो पहला कट तो मैं कहीं मार्क्स से मारूंगा, है ना. लाइफ सक्सेस इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स. उससे एक बार आप एंट्री करके फिर मार्क्स हम कोई नहीं देखता है.
लेकिन अगर मेरे को 100 में से 50 बच्चों का इंटरव्यू लेना है तो मैं तो बोलूँगा ना भैया जिसका 10th में फर्स्ट डिवीज़न होगा, 12th में फर्स्ट डिवीज़न होगा, यहाँ पे CGPA इतना होगा, उसको मेरे को दे दो, बाकी सॉर्टिंग करूँगा ना मैं, सॉर्ट तो करूँगा। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन देम, इट विल डिपेंड ऑन मी एज ए रिक्रूटर। मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो बोलूँगा ना कि नहीं ये मार्क्स, अगर मेरे पास उतनी बैंडविड्थ तक मैं 100 के 100 का इंटरव्यू कर सकता हूँ तो मैं सबको ले लूँगा, फिर तो मेरे लिए टैलेंट, इंपॉर्टेंट टैलेंट है। मार्क्स आगे जाके फायदा इतना वो नहीं करता है, बट पहला मेरे को अगर शॉर्ट लिस्टिंग करनी है तो उसके लिए क्राइटेरिया है। इट इज़ नॉट अ थिंग विच विल, पर मेरे को जो लगता है, आई डोंट नो, हाँ मेरे पास अगर मेरे को मालूम है कि मैं खाली, मेरे पास 2 घंटे का टाइम है, मैं खाली 10 बच्चों का इंटरव्यू कर सकता हूँ तो मैं 20 लूँगा, 20 में से 10 छांटूंगा, 50 के 50 का इंटरव्यू नहीं ले पाऊँगा तो उसमें कट जाओगे आप अगर मार्क्स अच्छे नहीं है तो इसलिए वो क्राइटेरिया तो लगाते ही हैं सब कि 12th के मार्क्स, 10th के मार्क्स और यहाँ का CGPA। एक आजकल तो AI आ गया है, उसको ठोक दिया, उसने ठोक निकाल के लिस्ट आपके हाथ में दे दी, बोले ये लोग हैं। सो इवन हमारे पास पहुँचता भी नहीं है फिर वो। इम्पॉर्टेंट दोनों है, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं, मार्क्स आफ्टर यू ज्वाइन, मार्क्स पलट के आपकी मार्कशीट को कोई नहीं देखेगा। देन इट्स यू एंड योर कॉम्पिटेंस, योर बिहेवियर, your attitude, all those things become, your delivery on promises, that becomes important. So other than meeting the JD, the job description and requirement, how do we ensure that this is the right fit for us, or are we the right fit for the company? See, old school of thought used to say कि whether he will fit into our culture. Now new thoughts कि we need somebody who can challenge our culture. So ऐसा कुछ नहीं है कि but decision is all about one is your communication skills. See in half an hour या 15 minutes के इंटरव्यू में हम आपकी intellectual ability भी नहीं जान पाते हैं, frankly speaking, बहुत ज़्यादा. Your communication skills become important, and that is where I say that improve your communication as much as you can. Practice it. ये जितना मैंने आज बोला मैं लिख के ले जाता था एक जमाने में। हाँ, वो अभी भी मेरे बैग में रखा होगा, अभी यहाँ ढूंढ के लाऊंगा तो देर आर 8 पेजेस, आप देखेंगे ये सारी स्टोरीज तक लिखी है मैंने, उसमें प्रैक्टिस किया मैंने, बट नाउ आई नो इट, आई लिव इन दो स्टोरीज, आई एंजॉय दो स्टोरीज। So now start practicing for interviews. Imagine that you are in an interview and somebody, what question they can ask. बैठे बैठे जवाब दो ना, create your answers. Definitely वो सवाल वो भी ढूंढ के लाता है, वो बोलेगा what is your strength, what is your weakness, पूछेगा वो. Now recruiters will come and ask those similar questions to you, but how different you are answering those questions becomes important. अब आपसे वीकनेस पूछ ली, आपने सीधे सीधे अपनी वीकनेस बता दी, ऐसा जरूरी थोड़ी है, वीकनेस है ही नहीं है बोलोगे तो भी नहीं मानेगा वो, है ना। ऐसा हो सकता है कि परफेक्ट आदमी, कुछ तो वीकनेस होगी। तो सर्च सच ए वीकनेस विच इज सीन एज ए कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेंथ। मेरे से कोई पूछता है आपका वीकनेस क्या है, मैं बोलता हूँ मैं बहुत डिटेल में जाता हूँ, आई गो इनटू डिटेल्स, समटाइम्स आई मिस माई टाइमलाइंस। तो वो मेरे को खराब तो नहीं बोलेगा, डिटेल में जाना तो अच्छी बात है, and I know that this is my weakness, so I can control my weakness also. Search out such weaknesses, search such things which make a positive impact. But you should, देखो आप अगर Google out what are the questions people are asking, normally घूम फिर के ना बहुत कम recruiters होते हैं, those who have that much of brain that they can ask different questions वही आते हैं, but how prepared you are, and preparation ये नहीं कि खाली question पढ़ लिया, आंसर क्या देना है, that story should be in your mind. The storytelling competence is something which makes you different. अभी मेरे को, मैं भी इंटरव्यू में कभी जाता हूँ तो मैं यही देता हूँ, सॉलिड विद सीमेंट, स्वीट विद शुगर, रोल्ड विद जेके टायर फॉर 6 years. सामने वाला बोलता है ये आदमी अच्छा है, तो क्रिएट समथिंग फॉर योरसेल्फ. When you are talking about yourself, talk about what you have done for the environment. Are you passionate about the society? कुछ तो जोड़ो अपने साथ, बट ऐसे भी नहीं जोड़ सकते कि उठा के जोड़ लिया, करना पड़ेगा. यू हैव टू डू दोस थिंग्स ना, राइट. एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ जी, हाँ. सी लैंग्वेज
इफ़ यू आर वेरी, देखो बोले हिंदी में बोल पाते हैं, अगर मैं आपकी हिंदी इतनी अच्छी है कि मेरे को प्रभावित कर रही है तो मैं प्रभावित होऊंगा। अगर तुम देसी लैंग्वेज हिंदी में मेरे को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर पाओगे। इंग्लिश एज शशि थरूर अंग्रेजी बोलता है, अच्छा लगता है। हिंदी में भी उतने कठिन शब्द हैं जो हम नहीं बोलते हैं। हम तो अपनी जो दिन की भाषा होती है, आपस में बात करते हैं, वैसा हिंदी बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी हिंदी अच्छी है तो फिर अच्छी हिंदी में बोलो। कैन यू इन्फ्लुएंस बाय स्पीकिंग हिंदी? मेरी बहुत अच्छी हिंदी है, मैं बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। वहाँ भी वोकेबुलरी है, हिंदी की वोकेबुलरी, कई ऐसे शब्द होंगे जो तुमने सुने भी नहीं होंगे। पूछूंगा तो कुछ नहीं आएगा आपको हिंदी में। तो लैंग्वेज फॉर श्योर, इंग्लिश इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। नोबडी कैन से दैट नो, इट इज़ नॉट। प्रिपेयर इट। अंग्रेजी किसी कमज़ोर नहीं है। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, 12th तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। 6ठी में आके अंग्रेजी ABCD चालू हुई थी हमारी। तो आप लोग तो KG से पढ़ना चालू किए होंगे, हमने 6th क्लास में ABCD लिखना चालू किया था। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। किताब पढ़ना चालू करो 1 घंटा रोज, गारंटी देता हूँ 1 साल के अंदर नोबडी कैन स्टॉप यू इन योर कम्युनिकेशन। 1 घंटा रोज कोई पढ़ लेगा। मेरे को वो रोज फोटो भेजता था खींच के। फिर मैंने बोला बेटा सीख क्या रहा है इसमें तू? तो उसने वर्ड्स की लिस्ट भेजनी चालू की कि ये नए वर्ड्स थे, और उसने वर्ड के आगे हिंदी में लिखा हुआ था उसका मतलब। मैंने बेटा इस अंग्रेजी को अंग्रेजी में भी मेंशन कर सकते हो। तो ही डिड दैट। इफ यू आर लर्निंग ए लैंग्वेज यू शुड बी इनटू दैट। इट्स वेरी इजी। हाँ, इट्स ऑल अबाउट creating those vocabularies in your mind. It takes hardly 6 months to be a good speaker. Hardly 6 months. Some practice and some time हो जाएगा। So language ऐसा नहीं है, हिंदी भी काम करता है। हिंदी works well. We do lot of talks when we work. हिंदी में हम बातें ही करते हैं। मेरे अपने वर्कर्स से, मेरे अपनी मीटिंग्स हिंदी में भी होती हैं। It's not necessarily English, but yes, you should be comfortable in both languages for sure. हाँ जी। Again, I say that when social skills, it is a competence, right? When I say interpersonal skills, find out what is interpersonal skills. Read about the behavioral indicators, work on it, evaluate. See, important is how you evaluate yourself. एक होता है कि अपने बारे में गलतफहमी पाल के रखना, पाले रहो, जिंदगी में फेलियर रहोगे। You should know कि ये मेरे को नहीं आता है। कई लोग हैं ना जो अपने आप को बोलते हैं कि मेरे को सब आता है। If that attitude, then you will not succeed. You should know this is my interpersonal skills मेरा कमजोर है, then you have to make efforts. First read out what are the interpersonal, Google करो, आपको दे देगा भी, और उन हर पॉइंट को पकड़ के then try to evaluate yourself and try to improve on those interpersonal skills. It's not that like I am known for my interpersonal skills. I have बोलते हैं ना, I influence people very fast. मैं कहीं जाता हूँ, किसी फोरम में जाता हूँ, तो एटलीस्ट इफ आई एम देयर व्हेन आई मूव बैक आई टेक एटलीस्ट 20-25 कनेक्शंस विद मी व्हेन आई गो बैक। सो दैट इज माय स्ट्रेंथ। ऑल्दो व्हेन आई एम असेस्ड, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, आई कम ऑलवेज एज इंट्रोवर्ट, बट विद प्रैक्टिस आई हैव बिकम एक्सट्रोवर्ट। मेरा साइकोमेट्रिक टेस्टिंग 3-4 बार हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस में। आई ऑलवेज कम एज ए इंट्रोवर्ट कि I am an introvert. I am not happy. I don't get along with people much. But with practice, people know me as an extrovert person. So it's all about changing your behavior pattern by learning those skills. So whatever you feel like, Google it. Google is a good thing to work upon. Behavioral indicator for interpersonal skills. वो बता देगा। जैसे टीम वर्क में है, what are the behavioral indicators? तो उन बिहेवियर्स को अपने लाइफ में लाने की कोशिश करो, यू विल बी सक्सेसफुल। एनीवन, इधर से कुछ हाथ उठा था? हाँ जी प्लीज। ओके। सी, important is when we talk about HR, it is the transparent way of working becomes important. Transparency is what makes HR successful. Because employee will trust you if you are transparent. And now for future, transparency is driven by technology. Everything in organization, HR processes are being digitized. Your ability to work on technology tools becomes important now. Invest your time
and into learning those digital skills. Data analytics is becoming important because there will be a lot of data from employees, है ना? You will able to cater to those needs through data analytics. So data analytics becomes very important. Everyone, not only HR, every field you need to be perfect into data analytics. One, not only knowing the digital tools, you should be comfortable in working on those digital tools. So next 5 years is all about technology as HR person. When you move, you will see that there are lot many digital tools available. All processes are digitized. Are you able to analyze the data which is generated through those digital activities? So more on that. But yes, connecting with people is what HR is all about. I still remember, I know many people by name. That is what my strength is. You should, whether that, and it's not an easy job. Abhi 5 minutes. When I was, my father, as I said, my father was a trade union leader. I got my first job because of my father. उस वक्त कैंपस रिक्रूटमेंट होता ही नहीं था, कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता था हमारे टाइम पे, तो आपको नौकरी ढूंढनी पड़ती थी बाहर जाके. कैंपस में तो कोई आता ही नहीं था, 91 की बता रहा हूँ. बट माई फादर वॉज ए ट्रेड यूनियन लीडर, स्ट्रॉन्ग मजदूर नेता थे. एंड ही माइट हैव टॉक टू माई डायरेक्टर ऑफ ACC सीमेंट कि मेरे बेटे को नौकरी मिला. आई गॉट माई जॉब. दैट वॉज द स्टार्ट. हाँ, आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर. पहले 3 महीने लोग मेरे को पांडे जी का बेटा बोलते थे. माई फादर वॉज वेरी पॉपुलर. बट विद माई हार्ड वर्क 6 महीने के अंदर मैंने उनको पांडे जी का पिताजी बना दिया. मतलब पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मी. सो यू शुड क्रिएट योर आइडेंटिटी. नाउ वेयर आई एम सेइंग हाउ टू क्रिएट दैट नेटवर्क, फ्रॉम वेयर आई लर्नड. My father was in a plant which was in Rajasthan. I got posting at Madhya Pradesh plant. And when I got posted, there was a canteen in charge who was reporting to me. But every day he used to come, बोले हम आपके पिताजी को जानते हैं. जब भी आता था वो डेली रिपोर्ट लेके आता था. एक बार जरूर बोल के जाता था हम आपके पिताजी को जानते हैं. So that was the connection he was creating to me through my father's कि मैं आपके पिताजी से मिला हूँ. And my father, after 6 months he came. वहाँ दशहरा का मेला होता था. My father came to visit me. दशहरे के मेले में हम घूम रहे थे. तो I told my father, मैंने कहा सामने से जो आदमी आता है ये रोज आके बोलता है कि मैं आपके पिताजी को जानता हूँ. बोले यार मैं तो नहीं जानता. कौन है? मैंने ये गौतम जी हैं हमारे क्लर्क. इतनी सी बात हुई थी, इतना ही टाइम था हमारे पास. बाय द टाइम इतनी बात खत्म हुई, द पर्सन केम क्लोज टू अस. एंड व्हाट माय फादर डिड, और गौतम जी क्या हाल चाल है? व्हाट यू लर्न? You created an impact on Gautam without knowing him, calling him by name. उसके बाद तो गौतम जी रोज आके मेरे पास बैठने लग गए. But calling people by name, creating those connections, I learned from my father. And उससे मैंने सीखा. When I go to a plant visit now, I have 30,000 people working in plants. I can't remember everybody's name, but when I move inside the plant, I keep a local guy, HR guy with me. मैंने कहा सामने से जो भी आ रहा है उसका नाम बोलते जाना. वो बोले सर सामने से दीपक आ रहा है. मैंने कहा और दीपक जी क्या हाल चाल है? That creates. थोड़े दिन ये नाटक था, और later on I started remembering names. I remember lot many people. सबको मैं जानता हूँ. But those efforts towards saying creating an interpersonal connect, your people orientation becomes important for HR. How you are connecting with people. When I move into an organization, the lift man, the security guy, they should remember you as a good guy. They will remember you if you respect them. जब यहाँ कॉलेज की एंट्री करते हैं तो उसको धन्यवाद बोलते हैं हम, थैंक यू बोलते हैं. खाली सलूट तो मारते अपनी जगह है, लेकिन आर यू रिस्पॉन्डिंग इन ए वे यू शुड, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. हाँ जी. झप्पी देना. Hello, Munna bhai, my brother was a doctor. He was in SMS Medical College, Jaipur. I am an unsuccessful engineering aspirant. मेरा प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में हुआ नहीं था. मैं गया था लेकिन I did my कोशिश किया था. तो इंजीनियरिंग में मेरा नहीं हुआ तो फिर मैंने MSW किया. बट जब मैं उसके लिए कोचिंग के लिए गया तो I was in Jaipur. I was staying with my brother in his hostel. He was a doctor, second year में था वो. When he used to go to hospital, every ward boy, every security guy, डॉक्टर साहब नमस्कार, everybody was saluting him. मैंने बोला यार you are a student, दूसरे जो सीनियर डॉक्टर आ रहे हैं उनको नमस्ते नहीं कर रहे हैं, तुमको इतना नमस्ते क्यों कर रहे हैं? ये सर बेटा तू नहीं होता साहब ने, तब मैं उनको बोलता नमस्ते.
So it's all reciprocal. Respect is reciprocal. You need to respect people. You need to create your space by respecting others. तो उसने बोला जब तुम साथ में नहीं होते तो मैं झुक के सलाम करता, आज मैं सीधा चल रहा हूँ तो मेरे को कर रहे हैं. So these are the small tricks in life which you helps. Okay, any one question? Otherwise, I will close with a small story. Fine. Let me complete. This is the last story. There was a basketball player. I am forgetting his name. Johnson. Which Johnson? Huh? Maybe. So when he was born in various suburb of America. Washington के suburbs में था. In his family, there were 4 siblings. Father single person थे जो earn करते थे. A day, Johnson's father thought that he was 14 years old at the time. This is a story on web, I have read somewhere. When he thought why not to make, वो बोलते हैं ना realization and जो बोलते हैं ना coaching, mentoring. तो एक पुरानी टी-शर्ट लाके उन्होंने अपने बेटे को दी, जॉनसन को. उसको दिया, बोला प्लीज गो एंड सेल इट फॉर $2. इट वॉज ए ओल्ड टी-शर्ट, पुरानी टी-शर्ट थी. द बॉय, यंग बॉय, उसने क्या किया, उसको धोया, ही आयरन इट, प्रेस किया एंड वेंट टू ए लोकल मार्केट. पूरा दिन वो मार्केट में खड़ा रहा उसको $2 में बेचने के लिए. पुरानी टी-शर्ट कौन खरीदा, बट इवनिंग ही गॉट द लक, somebody brought the t-shirt for $2. So he ran back to his father saying कि मैंने बेच दी $2 में. But his father was ready with another challenge. He gave the same old used t-shirt to him saying that go and sell it for $20. ऐसे boy again he thought that क्या करना क्या है, but he was very creative in his mind. Again he washed it, ironed it. One of his friend was small kid. उसका दोस्त जो है एक अच्छा आर्टिस्ट था. So he asked him to draw a कार्टून, डोनाल्ड डक उस पर बनवा लिया उसने बाय वाटर कलर से. बनाने के बाद ही वेंट टू आउटसाइड ए स्कूल वेयर रिच किड्स वेर कमिंग. स्कूल के बाहर लेके खड़ा हो गया. अब कई बार बच्चे जिद कर जाते हैं, एक कार से कोई बच्चा होता है, उसने बोला ये टी-शर्ट चाहिए मेरे को, तो वो ही सोल्ड इट फॉर $20. ही वॉज हैप्पी. ही रैन बैक टू हिज फादर सेइंग दैट मैंने बेच दिया $20 में. हिज फादर अगेन गेव ए टी-शर्ट टू हिम, भाई इसको $200 में बेच के आओ. द बॉय वॉज पजल्ड, बट उसने सोचा कुछ तो करना है. He again washed it, ironed it, and he got information that there was a movie premiere in the city, town, and जो उसमें multiplex में there is a the actress, the heroine is coming there. तो वो जाके खड़ा हो गया. शो जब छूटा, जब वो बाहर आई एक्ट्रेस, तो उसने can you give me an autograph please. छोटे बच्चे को देख के उसने पेन लिया, उसकी टी-शर्ट पे साइन कर दिया. And record says that t-shirt was sold for $1,200. Point of the story is you have to stretch your imagination. You have to stretch your capabilities. You have to stretch your targets. You have to work innovatively. You have to be creative in your life, and that is the success mantra. हाँ जी. सर, एक स्टूडेंट को अपनी लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करें जिससे बाकी लोग उसके जीवन शैली से प्रभावित हो? One is definitely you can impress people by your those 5 values. सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोग रहते हैं, उससे लोग जज कर लेते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, तो ऐसा होता भी नहीं. परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है. सी, परसेप्शन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है. नाउ परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कोई एक फिक्स फार्मूला मैं तुमको तो नहीं दे पाऊंगा, बट एफर्ट्स के बारे में बता सकता हूं कि हाउ परसेप्शंस आर क्रिएटेड. I joined ACC in 1991. I was HR trainee. There were 3 engineer trainees joined with me. We all 4 were allotted a single house. एक घर हमको दिया गया था शेयरिंग बेसिस पे, जिसमें हम रहते थे. I used to go to office daily, and a day when I was coming back, पैदल ही आते थे. The cashier of the company, he was having a scooter. उसने मेरे को स्कूटर में बिठा लिया कि मैं छोड़ देता हूँ आपको. जब मेरा घर आया, मैंने कैशियर से बोला रोक दीजिए, मेरा घर आ गया. तो उसने बोला यहाँ तो कोई लड़के रहते हैं. Now, he was not considering me as लड़का. Why? क्योंकि मैं दिन में 2 बार बूट पॉलिश करता था उस वक्त. परसेप्शन क्रिएट किया था कि मैं लड़का नहीं हूँ. आई एम HR ऑफिसर ऑफ दिस कंपनी. वो लड़के थे 3 इंजीनियरिंग वाले, वो जैसे कॉलेज में थे वैसे थे. वो निक्कर पहन के सिगरेट की दुकान से सिगरेट भी ला रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, निक्कर में दिख रहे हैं, उनको लड़के बोलते थे. मैं कभी बाहर निकलता था तो बिना तैयार के नहीं निकलता था. मैं अपना परसेप्शन क्रिएट करता था कि आई एम समवन हु हैज एंटर्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट अ डिफरेंस. सो थिंक अबाउट योरसेल्फ. मैंने बोला कोई परफेक्ट फार्मूला, मैंने दिन में 2 बार पॉलिश करी, तुम्हारा 2 बार पॉलिश करोगे तो तुमको कोई नहीं देखेगा. वो मेरा फार्मूला था.
मेरे को पहली सैलरी, हर सैलरी पे मैं जाके एक नया कपड़ा खरीदता था, वो मेरा तरीका था। एवरी सैलरी फॉर फर्स्ट 3 years एवरी मंथ 1 न्यू मेरे को शर्ट पैंट लेनी होती थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस एंटायर वर्ल्ड बाई सेइंग दैट आई लुक फाइन। मेरे को शौक था, कैन यू क्रिएट योर सेल्फ समथिंग फॉर योर सेल्फ, नॉट नेसेसरीली कपड़ों से होगा, देयर में अदर थिंग्स जो यू कैन डू, बट सोचना पड़ेगा। हर दिन को एक इवेंट के रूप में समझोगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। आई डू दैट। आई क्लिक ए फोटोग्राफ एवरी डे इन द मॉर्निंग व्हेन आई एम इन द लिफ्ट। अभी खोल के दिखा सकता, इट्स ऑन वेब ऑल्सो, आई पोस्ट समटाइम्स। बट पहला काम, जैसे लिफ्ट में जाता हूँ, शीशे में अपने को क्लिक करता हूँ, मतलब वाह पांडे जी कितने अच्छे लग रहे हो आज। आई डू दैट, आज की भी दिखा दूंगा। आई क्लिक फोटोग्राफ एवरी डे, बट फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए तैयार होकर खींचनी पड़ेगी ना, गंदी फोटो तो नहीं खींच सकता अपनी मैं। सो आई व्हेन आई कम आउट आई एम वेल सूटेड बूटेड, बिल्कुल तैयार होकर निकलता हूँ। दैट इज हाउ आई क्रिएट माई परसेप्शन अबाउट माई सेल्फ। अगर मैं यहाँ बोलने आ रहा हूँ तो मैंने कल रात 1 घंटा सोचा होगा कि मेरे को क्या क्या बोलना है। आई माइट हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट, ऐसे ही उठ के नहीं आ जाऊँगा। प्रिपेयर फॉर एवरी इवेंट, बी रेडी फॉर एवरी इवेंट, एवरी डे। कौन कब आपको देख लेगा, you should think about it. People are watching you. अगर परसेप्शन क्रिएट करना है अपने बारे में तो यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, यू हैव टू वर्क ऑन योर फिटनेस, यू हैव टू वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट? Yes, sir. मेरा मसाला खत्म हो गया, इसके आगे